riding high when I was king. I played it hard and Assalamu alaikum and good morning everybody. So today we have a very special day because we are going to the flying school, Rawalpindi Flying Club, और हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जिनका हम फाइनली इंटरव्यू करेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे और हमें बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने का मौका मिलेगा. तो अल्लाह खैर करे, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और कैप्टन सरवत साहब से हम जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, जितना उनका एक्सपीरियंस उनसे शेयर करवा सकते हैं, वो ज़रूर उनका हम ब्रॉडकास्ट करें और उसको साथ साथ रिकॉर्ड करते जाएँ इंशाल्लाह. तो विशेस गुड लक. अभी हम जो है अपने रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब की तरफ जा रहे हैं एंड वी विल गाइज कीप यू अपडेटेड इंशाल्लाह. कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, वो सारा कुछ हो गया और मैं मतलब PIA में फ्लाई भी कर रहा था. देन ही रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट कि इसको ऑफिशियल अप्रूवल के साथ, वरना ये था कि ब्लड रिलेशंस फ्लाई नहीं कर सकते. टू ब्रदर्स, फादर सन मना था. ऑफिशियल परमिशन लेके उस फ्लाइट को, इट वाज अ 6 सेक्टर फ्लाइट. जी, इस्लामाबाद से लाहौर, मुल्तान. मगर ये लग्जरी आपको दिखा रहे हैं ना सर, जी सर, ये दिन दिखा रहे हैं और रात भी. It was something like 7:15 रात का मिला था सर जी. अगर इस तरह का दिन होता ना तो मेरा डिसीजन ही कुछ और होता. It would have changed my perception. नहीं, आप अपना करें. मसला ही नहीं है ना, टेक्नोलॉजी इतनी वो हो गई है कि हमें तो टेंशन ही नहीं है. उसकी रेंडरिंग आपने नाइट में कर दी है. नहीं यार, दिन में हम चलो एंजॉय ले रहे थे. ये बिल्कुल ऐसा यही सीन था. आई एम रियली इम्प्रेस्ड, माशाल्लाह. एक्चुअली वही सीन to white to red. जी बिल्कुल, ऑन द वास, एब्सोल्युटली विजुअल अप्रोच इंडिकेटर है आपका. बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच यार. ये पहली बात ये कि आप लोग जो है ना, खासकर जो फ्लाइंग वाले हैं, वो जो है ना सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें इमरजेंसीज की. बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट क्रैश इन्वेस्टिगेशन, जिसमें मैंने F-16 की भी इन्वेस्टिगेशन की है. बाकी और जो मेरा कंक्लूजन सिर्फ यही है कि जो पायलट एरर होते हैं या जो ह्यूमन फैक्टर होते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, दे डू नॉट प्रैक्टिस इमरजेंसीज. इवन जो टेक्निकल लोग जो होते हैं, दे डू नॉट फॉलो दी बुक्स. तो बुक्स को जरूर यदि कर पड़े, ठीक है ना. जस्ट नेवर रिलाई ऑन मेमोरी, बिकॉज व्हेन देयर इज सम डाउट, देयर इज एक्चुअली नो डाउट. Absolutely. That's right. Very well said. Word of wisdom. Very well said. So I mean, so you have to be really. तो अपना एक इमरजेंसी प्रैक्टिसेस और फॉलोइंग बुक, these are the two things. और एक और चीज़ थी ना जो कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि there was the induction of about more than 100 technicians और there were 6,000 applicants. तो आई आस्क्ड माय बॉस, मैंने कहा सर हमारा तो एक बड़ा रुडिमेंट सा प्रोसीजर है कि हम लेते हैं उनका ट्रेड टेस्ट लेते हैं एंड वी जस्ट हायर देम. सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज हमारे जो इतने भी टेक्नीशियंस हैं, दे वर्क ऑन $multi-million इक्विपमेंट. सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट हम किस तरह के लोग हैं. तो मैंने इंस्टीट्यूट किया था इंटेलिजेंस. सो एवरीवन हु इज who wants to be part of aviation, he must be intelligent enough to undertake all, because aviation के अंदर जो भी है सब very very expensive machine. जैसे कि आप सब देख सकते हैं, we have the legend of the aviation in Pakistan so far, क्योंकि he is the one of the first of the special pilot who flew with his father, and it's definitely a great honor for us because he is the guy who has been featured on New York Times back in those days. So right, sir, I just wanted to ask and start with a few of the questions. So what inspired you to become a pilot at the first place? Of course, it was your father. It was my family and my father. He was a pilot. My mother wanted me to become an engineer. Awesome. But my father's desire was that I should Become a pilot. And he offered me, he said, would you like to go to the Air Force or would you like to go to the civil side? So that was a tempting offer.
I decided that I would go to civil side because I had seen my own father starting his career from the Air Force, 3rd GD. Ultimately, he joined PIA after about 17 years of PF service. In Manica, that I will also start my career in civil. Rawalpindi Flying Club is where I started. And we are so proud of you to have you since as our I'm alumni. so happy to be here. And sir, I just wanted to ask you one of the definitely special questions, and I'm sure that moment would have been one of your special in the heart. So how was your first experience flying with your father? Like when we used to, learn the car from the father, वो डांटते भी हैं, मारते भी हैं कि सीधे तरीके से चलाओ. तो क्या this was the same experience on the airplane जब आपके father आपको देखिए मैं guide बताऊँ करे? आपको कि now after having a lot of experience, so now I can actually appreciate. At that time, आप जिस वक्त का जिक्र कर रहे हैं, तो at that time my own experience was not enough. I had 250 hours. I had joined PIA. I had completed the ground training course, and I became a first officer on the F-27. So my experience is 250 hours only. I mean, this is no experience. Absolutely, sir. And there is my father who has tremendous experience as an instructor, and he is training me. So now only I can appreciate that at that time he was trying to teach me a lot. Absolutely. फर्रुख उनका क्या डिजायर होगा कि वो अपनी सारी जो उनकी सलाहियत, मगर he knew at the same time I don't have the capacity. You understand? He was such a great instructor that he realized that he wanted to teach me a lot. I don't have the capacity. But he taught me. I tried the best of my ability. And mashallah, the rest is history. And sir, I just wanted to ask one of the best questions. Of course, this is for everybody. कि आप work-life balance कैसे करते हैं? Like, you have the personal life, you have a family at home, and then you have to fly any time in the year. So how do you manage all these things? Because of course, this is something which is a dilemma in the aviation history itself. देखिए, this career of a pilot, Okay. इसके अंदर बड़ी sacrifices Yes, sir. Yes, sir. It demands sacrifice of your social life. Absolutely. If I tell you, for others and maybe people who are not aviation related, it sounds like a very glamorous profession. It sounds very exciting and glamorous that आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, कल आप Kuala Lumpur बैठे हुए हैं. Absolutely, sir. You are going all over the world, but I'm sorry to say, Yes, there's a price for all this glamour. Absolutely. I cannot tell you, and I think every pilot who is a commercial pilot with a long career will agree with me that we miss so many occasions. I have missed the growing up of my children. I have missed a lot of my family events, marriages, birthdays, anniversaries. There's so much to sacrifice. आपको याद है कि you sacrifice your sleep Yes. to take me to remember. Yeah, I mean, so many. Your life of a pilot is controlled and governed by the वो बताते हैं आपको कितने बजे उठना है, आपको कितने बजे सोना है, आपने कहाँ जाना है और कहाँ आना है. Because you are an asset for them, of course. You are an invested in asset. you. It looks very glamorous, but as I tell you, there's a price to pay for all this. And sir, since we have a controversy in Pakistan, it's not about that controversy. Okay. Since the PIA back then and PIA future now, since it's been on the edge of almost getting done. I understand. So what do you think on it? Exactly what you mean, but what I can tell you is, Yes, sir. आप PIA को isolation में नहीं दे सकते. Yes, sir. PIA is not an isolated entity of Pakistan. Yes, sir. Actually, Pakistan में overall हमारा downward slide आया in every field. Yes, sir. We did suffer a lot. Yes, sir. हमारी नेशनल शिपिंग थी, हमारी स्टील मिल्स थी, हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, we all suffered in PIA also. That's right. We are just part of this whole system, which actually, unfortunately, is slowly
not able to progress. जो heights हम achieve कर सकते थे, वो हमने किए. I'll be very clear and very clear. And sir, back then, of course, PIA was one of the best flights. Leading airline. We were looked upon. आप यकीन माने the green tail of PIA, world over wherever we used to go, was admired and respected. Sounds good. And sir, it's going to be the last one, Okay. since your time is very important. Yes. So sir, what would you advise to all of us, like all the aviators who are coming along to join this career and who are looking up to the grounds and the airfield? What's your advice? My advice is simple. Yes, sir. Remain inspired, work hard, and there has to be an emotional attachment to this job. Enjoy it. Yes, There has to be a passion. You have to be very passionate to join this profession. Unless you have passion, don't go towards the money side, but enjoy flying, enjoy it with a passion, and you will have a great career. Thank you very much, sir. That's all from my side. And it's honored to meet you and welcome you. And I'm sure we will have such discussions in future. Yeah. Thank you very much, sir. अच्छा बॉयज़ इंटरव्यू हमने कंडक्ट कर लिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज सच एन अमेजिंग टॉकिंग टू सच अ लेजेंड अल्हम्दुलिल्लाह एंड नाउ इट्स द टाइम व्हेन वी से गुड बाय टू हिम एंड ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट टाइम क्यों कैसा था ओवरऑल इट वाज ऑल गुड चलें अल्लाह खैर करे इस तरह से मज़ीद ऐसे सेशन होते हैं क्लास के अंदर और सर के साथ और ऐसे ही जूनियर्स के साथ हम इंटरेक्ट करते रहें एंड आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू मेक अस वे बेटर पायलट्स एंड वे बेटर पीपल ऑन द ग्राउंड थैंक यू वेरी मच बाज भाई जो हैं ये जहाज़ उड़ा रहे हैं इस टाइम और अभी कहाँ पर हैं हम सर पायलट कैप्टन वेयर आर यू सर मैंने कराची के टैक्सी वे से जहाज फ्लाई करा है अभी नाइस सो कैप्टन वेयर आर वी सपोज्ड टू लैंड आई डोंट नो जी तो बॉयज़ हम आ चुके हैं वापस घर और हमने आज कैप्टन सरवत हुसैन साहब का बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया उनसे जितना ज़्यादा वर्ड ऑफ विजडम हम कर सकते थे वो हमने उनसे ट्राई की कि ले सकें मज़ीद भी इंशाल्लाह इस तरह के सेशन हम कंडक्ट करेंगे इस तरह से पायलट्स के साथ कैप्टन्स के साथ और हमारे जो पाकिस्तान के असासे हैं हमारे सीनियर्स हैं ये जो नॉलेज का एक मुंबा है इनके साथ मुलाकातें करते रहेंगे इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इंशाल्लाह वी विल ऑलवेज एज कीप यू गाइज अपडेटेड थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़